Let me show you exactly what you are getting inside this kit. But first, let me tell you why it's a complete game changer. Before I made these resources, मेरा onboarding बहुत messy था. Clients were confused, approvals looked forever, revision felt endless. Then I started using this exact system. Within week, here what happens. One client told me, सुमना onboarding इतना smooth है कि मैंने 3 और रेफरल इसी वीक में भेज दिया. Another designer double her fee overnight because her presentation and process look so polished after using these templates. Multiple architects have told me they now close client faster with less negotiation. जब आप प्रोफेशनल दिखते हो लोग आपका प्राइस का क्वेश्चन नहीं करते एंड ऑलमोस्ट एवरीवन सेज द नंबर ऑफ द क्लाइंट रिविजन हैज ड्रॉप्ड बाय हाफ. ये थ्योरी नहीं है, दैट हैव बीन यूज्ड अ रियल क्लाइंट प्रोजेक्ट एंड दे वर्क वेदर यू आर सोलो इन अ स्मॉल टीम or handling multiple projects at once. Number 1. Interior or exterior mood board. When I started out, I wasted so much time trying to explain client how the final space would look. मैं समझती नहीं walls like this, floor like this, but उनके दिमाग में images clear नहीं होता है and that's why revision pile up. So I built this high quality mood board that visually show your walls, floor, facade and finish together in one frame. Clients see texture, tone and material crystal clear. Organized by space, kitchen, living, balcony plus regional finished suggestion, tiles, stone, laminate, what actually exist in our market. So material decision happen day one और बाद में कोई ड्रामा नहीं होता. नंबर 2 इज स्टाइल प्रेफरेंस टेम्पलेट. सबसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या है आपको पता है? एक क्लाइंट सेंड मी 50 प्लस रैंडम पिंटरेस्ट इमेजेस विद जीरो कॉन्टेक्ट्स. दिस स्टाइल टेम्पलेट किल्स दैट प्रॉब्लम. डोर, विंडो, फ्लोरिंग लेआउट, हार्डवेयर ऑल कवर्ड फ्रॉम मिनिमलिस्ट टू ऑर्नामेंट. क्लाइंट कैन इंस्टेंटली चूज what they want. I have included hardware reference like handle, lock, hinges क्योंकि छोटी छोटी डिटेल्स में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है अगर स्टार्टिंग में ये फाइनलाइज ना हो तो. इंस्टेड ऑफ आवर्स ऑन पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, ये देखो पिक वन एंड डन. नंबर 3 इज क्यूरेटेड कलर एंड पैलेट फ्रेमवर्क. कलर चूज कैन मेक या ब्रेक योर प्रोजेक्ट एंड मोस्ट क्लाइंट पिक कलर जो रियल में वर्क नहीं करते. I have created trend aligned palettes made for Indian design sensibilities जो फॉरेन पिंटरेस्ट से कॉपी पेस्ट नहीं लगता. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एंसेंट कलर शेड अरेंज्ड बाय स्टाइल लाइक मॉडर्न, rustic and classic. So you can match instantly. Ready to use combos for walls, furniture, decor. So the client see mood board, warmth and tone instantly. So client को बार बार ये बोलना कि ये एक बार ट्राई करके देखते हैं, ये टाइम वेस्ट और नहीं आता है इसमें. नंबर 4 जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, प्री बिल्ड ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंट. Professionalism start before the first design draft. The moment the client say yes, you send this the ready to use onboarding form जिसमें है welcome guide, timelines, checklist, editable in Word, PPT and PDF. Client feel you are a process driven professionals. मेरी खुद के प्रोजेक्ट में रेफरल आया बिफोर फर्स्ट ड्राफ्ट सिर्फ ये ऑनबोर्डिंग स्मूथ होने की वजह से. नंबर 5 इज एडिटेबल क्लाइंट क्वेश्चनर. This is your revision killer. It exacts every client preference before your design. Layout, function, style, likes, dislike, lifestyle needs, every Pinterest link, editable format, use digital or print. When you start with this clarity, guesswork zero. Approval first or design process becomes stress-free from both sides. You are not just buying this file, you are getting a client ready system जो आपको आवर्स सेव करेगा, प्रोफेशनल बनाएगा और प्रोजेक्ट स्पीड 2x करेगा विथ वे फ्यूअर हेडेक. सो ये हो गया आपका डिज़ाइन डिसीजन हैंडबुक. ये बहुत सारा आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर ने यूज़ किया है जो प्रोजेक्ट का रेवेन्यू भी बढ़ा दिया और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट का टाइम भी कम कर दिया. सो डाउनलोड लिंक नीचे है.